जो है रिवर हम डिस्कस करना था हमें नाउ मूव ऑन टू डैम्पिंग. अच्छा, बेसिकली damping, I had given you an idea what damping is about. ठीक है ना? ठीक है ना? Basically, damping is when you make an oscillating body opposes. Damping is actually is the effect of force to oppose the motion of the oscillating body. All right. Basically, damping forces are like they are just like friction forces. But friction is specifically when you have a surface. And that is when the moving body and the surface interacts. So the surface exerts a force opposite to the direction of motion and slow it down. Damping forces, again, when an object is undergoing simple harmonic motion but of course, that not always the oscillations may be useful for us. So you may then required to slow or stop the simple harmonic motion. And so what you do is that you introduce an external force and that acts such a way that tends to oppose the motion of the oscillating body from occurring, in fact. So the damping forces slow or stop the simple harmonic motion from occurring. Damping forces act in the opposite direction to the velocity. All right. And Galileo made an important observation while watching lamps swing in Pisa Cathedral. All right, they were like lamps were hanging in Italy, in Pisa. Pisa is a city of Italy, and there was a church. Cathedral is church actually. So in a church in Italy, a city of Italy, Pisa, Galileo observed they were like in that church, the lamps were hanging and they were like oscillating back and forth, undergoing simple harmonic motion. So he watched, he noticed, Ariba, that the swinging gradually died away, but the time taken for each swing stayed roughly the same. All right. Time जो है ना वो same रहा, यानी कि that is the time period. This is the time period. Talking about the time period. What you observed कि आपकी जो motion था, that was dying, that was slowing down. There was the swinging died gradually. All right, but the time period remained the same. All right, and that is the time in which one oscillation got completed. ठीक है ना? तो वो आपका जो है same रहा time period. The time for one complete oscillation that remained the same, but the swinging died away. The number of oscillations decreased. All right, the total number of oscillations थी ना, total number of oscillations वो decrease हो गई, लेकिन time period आपका same रहा, यानी कि एक जो आपका oscillation का time है that remained the same. The swing of the lamp was being damped by the air resistance. So what was introduced, what was actually making that thing happen, that Galileo observed, was the air resistance that damped the swing of the lamp. All right. Now, आपकी जो अरीबा damping होती है ना, वो that are of 4 types. एक होता है light damping. Light damping ना basically होता ही है, देखो damping का effect कहाँ आता है? If you're going to observe the effect of damping, so what you are actually going to observe is a decrease in the amplitude. ठीक है ना? Okay, for example, this is the pendulum mean position, and this is over here it is released. Now this is it's going to
reach the same level, gonna have the same amplitude in the first oscillation on the other end. When it's going to come back to its original position, so it may not come back over here if there's an air resistance or if there's some force, external force acting to oppose the motion. It may not come back to its original position, but somewhere below it. So which means then there's a decrease in the amplitude. All right. So that is what damping. That's what the effect of damping is, and that's what you're going to observe. And a time will come that you would observe that the object has become stationary. It's not undergoing simple harmonic motion anymore. There's no swinging at all. Then, all right. But how come now? You can actually reduce the oscillations, or you can actually reduce the amplitude of the oscillations in three different ways. You may reduce it gradually. That's what we call as light damping. As a result of that light damping, there is a very small magnitude of the external forces introduced. And so that gradually slow it down, the oscillations. And because of in a light damping, what you would observe that the time period would remain almost constant. It's not like that कि आपका जो time period है वो जो है वो exactly constant रहेगा नहीं. It will reduce क्योंकि आपकी जो total number of oscillations है वो reduce हो रही है, या फिर आपकी हर second के अंदर जितनी oscillations यानी frequency वो reduce हो रही है, तो time period भी reduce होगा. Time period will increase. बट जो है ना, द थिंग इज कि लाइट डैम्पिंग में यानी कि अगर आपकी जो ऑसिलेशंस हैं उनकी एम्पलीट्यूड अगर ग्रेजुअली रिड्यूस की जा रही है, and that is done if a very small magnitude of the opposing force is introduced externally into the system. So then you would observe the time period remains almost the same, doesn't get changed a lot. In heavy damping, you would observe then drastic change in the time period. And what you would observe else is that the body will be brought to rest very quickly. And this is of course done when a large magnitude of the opposing force is introduced. So in heavy damping, like in case of suspension of cars, आपकी जो suspension of cars होती हैं, तो वो बेसिकली क्या कर रही होती है कि जब आप when you go up through a speed breaker, so as a result of going up through the speed breaker and then coming down again, आपकी गाड़ी speed breaker से गुजरी और फिर जब वो नीचे आती है ना वापस, so there is again some oscillations or vibrations are produced in the car body. So what you want is that just want that those oscillations that are produced in the body to get reduced as soon as possible. जितनी वो देर से रिड्यूस होंगी उतनी ज्यादा आपको फील होंगी आफ्टर, just don't want that to get felt. आप ही चाहेंगे कि आपको जो है ना जो बॉडी में ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस है कार की एज अ रिजल्ट ऑफ गोइंग ओवर द स्पीड ब्रेकर, तो आप वो फील करें. You just want that to get reduced as soon as possible. So you just want that. So what's required over there is what we call as heavy damping. ठीक है ना, ताकि जो भी आपके ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो वो जो है ना रिड्यूस हो जाए टू जीरो as soon as possible in a very short period of time. ताकि क्योंकि आप गाड़ी में बैठे हुए अगर गाड़ी की बॉडी ऑसिलेट करेगी तो आप भी ऑसिलेट करेंगे. You're just going to feel that. You don't want that. तो आपके जो सस्पेंशंस आपके जो है when they get a little bit of use, when they are being used a lot, जहाँ आपके खड्डे ज़्यादा होते हैं कि गाड़ी बहुत अरसे से चल रही होती है, आप सस्पेंशन what happens is that the suspension system gets weakened. आपका सस्पेंशन सिस्टम जो है ना वीक हो जाता है. इसकी वजह से ये होता है कि फिर वो उसकी जो डैम्पिंग वो प्रोड्यूस करता है that's not that much appreciable. और फिर ये होता है कि पुरानी गाड़ियों में आपको जब आप स्पीड ब्रेकर होता है आप ज़्यादा फील करते हैं कि आप गुजरे हैं. नई जो कार्स होती हैं उसमें जब आप गुजर जाते हैं स्पीड ब्रेकर पर, यू मस्ट हैव अ कार, तो ये भी आप फील करते होंगे आपकी नई गाड़ी जब आप स्पीड ब्रेकर से खड्डे से चलते हैं, यू डोंट फील मच. ठीक है ना. सो that's an example of where you
ठीक है ना, जहाँ पर आपको हैवी डैम्पिंग की जरूरत पड़ती है. नाउ क्रिटिकल डैम्पिंग एक्चुअली ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेरी क्विकली विदाउट ऑसिलेशन. ठीक है ना, दैट इज व्हाट क्रिटिकल डैम्पिंग इज. अच्छा, आपके पास बेसिकली critical damping is even a little bit ahead of heavy damping. That is when the body is brought to rest or brought to the equilibrium point again very quickly without undergoing oscillation. यानी कि क्रिटिकल डैम्पिंग तो उन सिस्टम में होती है जहाँ पे आपकी जो है बहुत ही निग्लेजिबल, यानी आप जो समझ लें कि हैवी डैम्पिंग में तो होता ये है कि ऑसिलेशन जब प्रोड्यूस हो जाती देयर इज सम ऑसिलेशन, देयर आर सम ऑसिलेशन. ऐसा नहीं होता कि हैवी डैम्पिंग के अंदर ऑसिलेशंस हुई और फौरन खत्म हो गई. वो क्रिटिकल डैम्पिंग के you don't even, you just allow only very few oscillation, maybe a 1 or 2 oscillation, and then you just make it go back to its equilibrium position. और सिस्टम जहाँ पे क्रिटिकल डैम्पिंग हो तो वहाँ आपकी जो है oscillation maybe not even one oscillation may not occur completely, and the force, the opposing force brings it back to the equilibrium position. But in heavy damping, when in case of heavy damping, there are some oscillations that are produced, and then the system is brought to rest. In light damping, the process occurs very gradually. The system undergoes number of oscillations. You would observe then the amplitude is gradually increased. All right, this is the difference between three of these types of damping, and it's over damping. ओवर डैम्पिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप जो है ना ओवर डैम्पिंग में the oscillations are prevented. ऑसिलेशंस तो आपकी प्रिवेंट कर दी जाती हैं, लेकिन आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फौरन नहीं आते. यानी कि वो इतनी अपोज करती है कि आपकी बॉडी जो है ना देखो, एक होता है अरीबा, आपका जो मकसद ये होता है ना बेसिकली डैम्पिंग का, वो ये है कि ऑसिलेशन जैसी हो ना तो बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस होती है. तो डैम्पिंग का मकसद ये होता है कि आप इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस ले आए एज सून एज पॉसिबल. अगर ऑसिलेशंस हो रही हैं और ग्रेजुअली इसकी एम्पलीट्यूड डिक्रीज होके एक टाइम के बाद अगर आपकी जो है बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रही है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज क्रिटिकल डैम्पिंग. अगर आपकी थोड़ी सी ऑसिलेशंस हुई एंड quickly the body is being brought to the equilibrium position, वो heavy damping है. और अगर आपकी even if one of the oscillation isn't completed, अगर आपकी एक oscillation भी complete नहीं हुई और the body is brought back to the equilibrium position, that's what we call as critical damping. और over damping ये है कि जो है ना आपकी oscillation एक भी not even one of the oscillation is completed, but because of due to over a large magnitude of opposing force, आपका जो बॉडी है ना वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भी नहीं आ रहे होते. समझ रहे? वो that is that stops in that position where it is actually. ठीक है ना, यानी कि आपकी लाइट से डिस्प्लेसमेंट हुई, आपका ऑब्जेक्ट इधर आ गया. और ओवर डैम्पिंग अगर होगी ना तो ऑब्जेक्ट जैसे ही इधर आएगा ना, वो मैग्नीट्यूड ऑफ द अपोजिंग फोर्स इतनी लार्ज होती है कि वो इधर ही रुक जाएगा. मतलब वो फोर्स इतना भी ओवर होगी, फोर्स वो इतना अलाउ नहीं करेगी कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए. मतलब वो इतनी फोर्स, इतनी लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्ट होगी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो इधर ही रुक जाएगी. दैट्स व्हाट वी कॉल एज ओवर डैम्पिंग. सो व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ओवर डैम्पिंग इज, उससे ये होगा कि आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ना, हालांकि ऑसिलेशन तो नहीं हुई ना, लेकिन क्या हुआ कि आपकी बॉडी जो है ना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भी नहीं आई. तो ये डिसएडवांटेज है. वो डिस्प्लेस हुई भी है, रुक गई ऊपर, और फिर उसको
टाइम लग रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने में, दैट्स व्हाट ओवर डैम्पिंग इज। इज इट क्लियर और नॉट मिस रीबा? रीबा साहब बात समझ आ गया आपको बेटा? अच्छा, फिर क्या है डैम्पिंग एंड रेजोनेंस? सो डैम्पिंग reduces the size of the oscillations at resonance. Okay, there is still a maximum amplitude reached, but it is much lower. अच्छा, अब होता ये है, मतलब अगर आपके सिस्टम में डैम्पिंग हो रही है ना, अच्छा अगर आपके सिस्टम डैम्प ना हो, तो वी जस्ट लर्न इन द लास्ट क्लास के अगर आपका सिस्टम डैम्प ना हो और आप इट्स अंडर इट्स और आप उसको थ्रू सम फोर्स जो है उसको ऑसिलेट करा रहे हो, दैट इज ऑसिलेटिंग एट अ ड्राइवर फ्रीक्वेंसी, और अच्छा ऐसा नहीं है कि जो है वो रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस का ताल्लुक है कि किस फ्रीक्वेंसी पे आप ऑसिलेट करा रहे हैं। अगर आप जैसे थ्रू सम फोर्स अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है और वो जिस फ्रीक्वेंसी पे आप ऑसिलेट करा रहे हैं और नेचुरल फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाए, तो रेजोनेंस होती है। तो अब रेजोनेंस आपकी तब भी होगी जब आपके सिस्टम में डैम्पिंग नहीं होगी, और तब भी होगी जब आपके सिस्टम में डैम्पिंग होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि क्योंकि रेजोनेंस होती है तो आपकी लार्ज इंक्रीज आता है, ड्रास्टिक इंक्रीज आता है इन द एम्पलीट्यूड। लेट्स सपोज इन द एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग, अगर आपकी जो रेजोनेंस एट रेजोनेंस जो आपकी एम्पलीट्यूड रीच हो रही है वो एक्स है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग जो एट रेजोनेंस आपकी एम्पलीट्यूड रीच होगी, दैट विल बी स्लाइटली लोअर देन दैट, लेट्स टेक दैट एज x1। ठीक है ना? तो देखें आप, ये है कि अगर आपकी बॉडी, अगर आपके सिस्टम में डैम्पिंग नहीं है, एक्चुअली क्या कहते हैं, आपकी जो है द एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग, देखो एट रेजोनेंस जो आपकी एम्पलीट्यूड रीच हो रही है दैट इज दिस वन x, and in case if you have a light damping in this being introduced in the system, then at resonance जो आपकी एम्पलीट्यूड रीच होगी दैट विल बी अ लिटिल लेसर x1, और हैवी डैम्पिंग में और कम, और इनफैक्ट क्रिटिकल डैम्पिंग में तो मे बी शायद यू नो रेजोनेंस जो होगी ना दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी एज निग्लेजिबल, और ओवर डैम्पिंग में तो खैर होती नहीं है। तो ओवर डैम्पिंग के अंदर तो ऑसिलेशन ही रुक गई ना, उसमें तो आपकी रेजोनेंस होती नहीं है। लेकिन क्रिटिकल डैम्पिंग में जो होती है ना रेजोनेंस, दैट इज कंसिडर्ड टू बी निग्लेजिबल, तो दैट कर्व विल बी देन लाइक दिस। तो यहाँ पे जो आपकी रेजोनेंस है एट रेजोनेंस जो आपकी एम्पलीट्यूड है दैट्स द सेम एज एट अदर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है ना? इस वजह से। अच्छा फिर, अच्छा फिर आपके पास जो है ना, अगर मैं बात करूं उसी ग्राफ, हाउ डू वी रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड एज अ रिजल्ट ऑफ डैम्पिंग? सो दिस ग्रे वन इज the undamped, when you don't have any damping. So this is how your variation in the displacement looks like. This has taken a shape of the cosine curve. If we introduce damping, in fact light damping, so the shape, the variation in the displacement is not going to take the shape of either sine, or it will take the shape of a cosine curve, but the amplitude is not going to be the same at every instant.
like at it is it A over here now. On the other hand, it's not going to be minus A. In fact, a little lesser. Then over here, it's going to be 0 as it is. Now at on the other hand, again the amplitude is not going to be the same. It's going to be a little lesser. ठीक है ना, ये these are at the ends actually. Amplitude होती है जब आपका object जो है ना, that is at the extreme ends about the mean position. Mean position के about जो आपके extreme ends हैं, तो उन positions पे आपकी displacement maximum यानी amplitude होती है. तो you can see कि ये वो points है, ये point है, ये point है और ये point है. इस point पे यहाँ पे initially amplitude plus A है. This should have been minus A if there would have been no damping. क्योंकि लाइट डैम्पिंग की वजह से अब इसकी जो एम्पलीट्यूड है on the other end, that's going to be a little lesser. और फिर even when it's going to come back to its original position, it's not going to when it's going to head back to its original position, it's not going to reach at the same reach the point of release. It's going to be a little, it's not going to reach the point of release in fact. ठीक है ना, क्योंकि वापस अगर यहाँ से रिलीज हुई है तो वापस जो है ना, इट्स गोइंग टू कम लाइक ओवर हियर टू ओवर हियर, ये अपने ओरिजिनल पॉइंट ऑफ रिलीज पे नहीं पहुंचेगी. ठीक है ना, लिटिल लेसर एम्पलीट्यूड, लेसर देन प्लस ए. और हैवी डैम्पिंग के अंदर अच्छा, और आप व्हाट यू कैन सी कि आपका जो टाइम पीरियड है दैट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट. अगर जैसे कि आपका यहाँ जो है दैट्स योर टाइम पीरियड, ये आपका टाइम पीरियड है. ठीक है ना, this is where your one oscillation is completed. So the time period when you have light damping and when there's no damping in the system, that's you can see that आपका जो time period है that remains fairly constant. Although ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बढ़ जाता है लेकिन still. अच्छा, फिर सॉरी कम हो जाता है. डैम्पिंग होती है ना तो उससे टाइम पीरियड आपका कम हो जाता है. अच्छा, फिर आपके पास हैवी डैम्पिंग होगी तो व्हाट यू कैन सी कि आपके पास अब जो चेंज आ रहा है, वेरिएशन आ रही है इन द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द वर्टिकल एक्सिस. तो जो चेंज आ रहा है इन द डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम देखो ज़्यादा आ रहा है. ठीक है ना, व्हाट यू कैन सी क्या एट एक तो आपके पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आ रहा है. यहाँ पे मैक्सिमम थी, फिर यहाँ 0 हो गई और इनफैक्ट आपका जो टाइम पीरियड है ना वो भी बढ़ गया और अब कम हो गया इनफैक्ट. ठीक है ना, सो एक्चुअली रिप्रेजेंट्स दैट कि आपकी जो ऑसिलेशंस हैं कि एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस हो इन अ वेरी क्विक टाइम. ठीक है ना, एंड व्हाट यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पर आके देयर इज नो मोर एम्पलीट्यूड व्हिच मींस देयर इज नो मोर ऑसिलेशंस. ऑसिलेशंस होती हैं तो वेरिएशन आती है. अब यहाँ पे आके वेरिएशन खत्म हो गया व्हिच मींस दैट आपकी जो ऑसिलेशंस हैं कंप्लीटली स्टॉप कर दी गई हैं ड्यू टू डैम्पिंग. इट्स हैवी डैम्पिंग. ठीक है ना, and you need to again remember these variation. In fact, you need to remember the graphical representation of the variation in the displacement as a result of damping and when the system and also in the absence of damping. The presence of damping and in the absence of damping, how you represent graphically the variation in the displacement, that you need to remember that. ठीक है ना. अच्छा, क्रिटिकल डैम्पिंग में आपके पास जो है ना बेसिकली जो एम्पलीट्यूड है ना वो रिड्यूस होती है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ इवन टाइम लेसर देन what is consumed, what is टाइम इन जो टाइम आपका क्रिटिकल डैम्पिंग में जितने टाइम में आपकी क्रिटिकल डैम्पिंग में रिड्यूस होती हैं, जितने टाइम में क्रिटिकल डैम्पिंग में आपकी जो है वो रिड्यूस होती हैं ऑसिलेशंस, वो और भी कम है कंपेयर टू द टाइम इट टेक्स फॉर द ऑसिलेशंस टू get to 0 in heavy damping. So you can see that it's a very short period of time. और यहाँ आपकी जो है ना the oscillations, even one oscillation is not gets completed. That's what I was telling you. कि even एक oscillation भी complete नहीं होती है and
the object comes to its equilibrium position. अच्छा, ओवर डैम्पिंग में भी आपके पास बेसिकली ऑसिलेशन तो कोई कंप्लीट नहीं, यू कैन सी ऑसिलेशन तो कंप्लीट नहीं हुई, बट आपका जो देखो ना वेरिएशन, आपके जो ऑसिलेशन है ना वो कंप्लीट नहीं हुई, हैवंट गॉट टू नेगेटिव। या अगर नेगेटिव में जाता तो मैं कहता कि हाँ वो एक पॉइंट से मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे गया, यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे गया, फिर ये दूसरे एंड पे आया। अभी आप देखें कि इन केस ऑफ ओवर डैम्पिंग आपकी ये जो वेरिएशन है इन द डिस्प्लेसमेंट ये नेगेटिव में जा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि जिस पोजीशन पे भी है ना उसी पोजीशन पे ही आप यू कैन से कि है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो बहुत लार्ज है। तो उसने क्या किया है कि एट द पोजीशन ऑफ सम डिस्प्लेसमेंट जो है ना आप जो ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर दिया, बट इट्स टेकिंग टाइम एंड ड्यू टू दैट लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स द ऑब्जेक्ट इज टेकिंग टाइम टू कम टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तभी जो है ना आपकी ऑसिलेशन तो खैर कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने में यानी यहाँ ही पे स्टॉप कर दिया है और यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन आने में टाइम लग रहा है। इट्स व्हाट ओवर डैम्पिंग इज, ठीक है। An oscillation is damped when the amplitude and mechanical energy of a system gradually decreases to zero as a result of dissipative forces, that is the opposing forces, that may be in the form of friction, air resistance, or any other internal force. Amplitude and frequency will be reduced during damping. That's what we observe. Amplitude भी reduce होता है और frequency यानी time period बढ़ जाता है, और time period बढ़ता है तो आपकी frequency कम हो जाती है। Damping is a process whereby energy is taken from the oscillating system. अब आप किसी जो है अगर सिस्टम को अपोज करेंगे उसके मोशन को, तो आपकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी आउट ऑफ द सिस्टम, फ्रॉम द सिस्टम। तो दरअसल आपकी एज अ रिजल्ट ऑफ डैम्पिंग energy is taken from the oscillating system, it's transferred from the system to the surroundings. It may be in the form of heat or any other form. When there is damping, amplitude decreases and period increase. Period बढ़ जाता है, ठीक है। एक ऑसिलेशन का जो टाइम है ना वो बढ़ जाता है, ये होता है, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी आपकी रिड्यूस होती है। अब लाइट डैम्पिंग के हवाले से हमारी डिस्कशन हो गई, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर इट, ठीक है ना। और क्रिटिकल डैम्पिंग और हैवी डैम्पिंग की भी मैंने आपको शो कर दी है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। The system returns to its equilibrium position in critical damping in the shortest possible time without any oscillation. Oscillation नहीं अगर होती और आपका सिस्टम जो है in the shortest time equilibrium position में रिस्टोर हो जाता है। हैवी डैम्पिंग के अंदर आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ डिसिपेटिव फोर्सेस होती है लार्ज, बट ऐसा नहीं होता कि आपकी ऑसिलेशन ना हो। ऑसिलेशन जो है ना वो होती है, ठीक है ना। बेसिकली ये हैवी डैम्पिंग नहीं है, ओवर डैम्पिंग, ये ओवर डैम्पिंग है। बेसिकली ये ओवर डैम्पिंग है, हैवी डैम्पिंग नहीं है, ये भी आपकी ओवर डैम्पिंग है, ठीक है भाई। So the system returns to the equilibrium position very slowly without any oscillation. Over damping occurs when the resistive forces exceed those of critical damping. Over damping तब होती है जब आपकी resistive forces critical damping वाली resistive forces से बढ़ जाए। Critical damping is important so as to prevent a large number of oscillations. उसकी मैंने आपको example दे दी है in case of a car and there being too long a time and the system cannot respond to further disturbances. Instruments such as balances and electrical meters are critically damped so that the pointer moves quickly to the correct position without oscillating. ठीक है ना। Shock absorbers on a car जो हमारी डिस्कशन की थी critically damp the suspension of the vehicle and so resist the setting up of vibration which could make control difficult or cause damage. तो ये दो आपके एप्लीकेशंस है जहां आप क्रिटिकल डैम्पिंग यूज होती है, सो यू मे रिमेंबर दिस एज वेल। अच्छा, और
बाकी ये natural frequency of the system is the frequency at which it will vibrate freely, since every real oscillating system experiences some degree of damping. If no external energy is supplied, the system eventually comes to rest. तो आपकी रियल लाइफ में जो ऑसिलेटिंग सिस्टम्स होते हैं, they do experience damping because there are external forces acting on them, or maybe an internal force as well. If no external, you need to put in some energy externally into the system because they are losing energy as a result of damping. So in order to make them continue to oscillate, you need to put in some energy externally into the system. Otherwise, they will come to rest. For the oscillating system to maintain a constant amplitude of oscillation, it is necessary to apply an external oscillating forces. अब जाहिर सी बात है, आपके रियल लाइफ सिस्टम में जहाँ आपकी डैम्पिंग हो रही होती है, तो वहाँ उनको अगर उनकी आपने एम्पलीट्यूड जहाँ आपकी यूजफुल है, तो बहुत सारी जगहों पे ऑसिलेशंस यूजफुल होती हैं। तो जहाँ आपकी ऑसिलेशंस यूजफुल हैं और आप चाहते हैं कि उनकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे, बट ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू बी सब्जेक्टेड टू डिसिपेटिव और अपोजिंग फोर्सेस, तो वो डैम्प जरूर होंगे. But because you do need to have you do require those oscillations to continue to take place, and so in order to maintain their amplitude, you have to introduce some external oscillating forces. That's what we call as driving force. Now, forced oscillation is motion produced when a system is acted upon by an external periodic force. The system will oscillate with the frequency of the driving force and not with the natural frequency. अगर आप कोई external force introduce करा के oscillate कराते हैं system को, then it's going to oscillate at the driving frequency, not at the natural frequency. And when if the frequency at which you are making the system oscillate gets equal to the natural frequency, so there then what we call in physics resonance occurs. And resonance occurs when the amplitude of force vibration reaches a maximum. The driving frequency equals the natural frequency of the driving system. At resonance, there is maximum transfer of energy from the driving system to the oscillating system. Amplitude of vibration depends on the relative values of the natural frequency of free oscillations and the frequency of the driving force. आपकी जो एम्पलीट्यूड है एट रेजोनेंस, वो डिपेंड करती है कि आपकी जो जर्नली वाइब्रेशन या ऑसिलेशंस अगर सिस्टम में हो रही हैं, उनकी जो एम्पलीट्यूड है दैट डिपेंड्स ऑन कि आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है सिस्टम की और ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है. और सेकेंडली ये कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन आल्सो डिपेंड्स ऑन दैट टू व्हाट एक्सटेंट द सिस्टम इज बीइंग डैम्प्ड. तो जितना ज़्यादा डैम्प होगा उतनी कम एम्पलीट्यूड होगी, ठीक है ना. और एट रेजोनेंस, in case of no damping, the amplitude of the system is largest. ठीक है ना. जहाँ लाइट डैम्पिंग होती है वहाँ आपकी जो एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस है वो थोड़ी और कम हो जाती है. एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस मींस द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है. एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस मींस जो आपकी एम्पलीट्यूड रीच हो रही है एट रेजोनेंस, दैट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो आपकी रीच हो रही है एट रेजोनेंस. वो इन द एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग सबसे ज़्यादा होती है. अगर आपकी लाइट डैम्पिंग है सिस्टम के अंदर, तो रेजोनेंस के वक्त जो लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड रीच होगी वो थोड़ी और कम होगी, और अगर हैवी डैम्पिंग है तो फिर आपकी एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस जो आपकी रीच होगी वो और कम होगी, ठीक है ना. दीज आर द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स. ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स है एट रेजोनेंस अकरिंग इन cases or in different cases of damping, ठीक है ना. And what you can see is that in the absence of damping, the largest amplitude or the amplitude at resonance is the greatest among all cases where you have light damping and heavy damping. और ये आपके रेजोनेंस के प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है ना. प्रोज क्या है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स इन विंड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना. लाइक जो आपका होता है, जो आपके विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दैट जो आपके जैसे सीटी होगी फॉर एग्जांपल, विसल जो होती है, उसमें आपके पास जो है ना रेजोनेंस होती है, जिसकी वजह से यू बिकॉज दैट्स अ विंड इंस्ट्रूमेंट, और उसमें जो साउंड होती है ना, दैट इज प्रोड्यूस्ड एज अ इफेक्ट ऑफ द वाइब्रेशंस इन द विंड अराउंड दैट विसल. जो आपकी उस विसल के अराउंड जो आपकी एयर होती है ना, उसमें आप अपनी
जो है ना फोर्स के थ्रू वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड ऑफ कोर्स जो है जो एंड रेजोनेंस occurs there as well, तो जिसकी वजह से you just hear a very loud voice। अच्छा, और इसी तरह रिसेप्शन ऑफ रेडियो सिग्नल, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस occurs when radio circuit is tuned so that its natural frequency is equal to that of the incoming radio signal। अच्छा, मतलब आपका जो रेडियो होता है ना, आप उसे क्या करते हो, ट्यून करते हो, ठीक है ना, ट्यूनिंग जिसे कहते हैं रेडियो की। तो वंस आपका जो भी, जैसे देयर आर डिफरेंट चैनल्स दैट डिसिपेट, दैट्स व्हाट वी गोइंग टू लर्न एज वेल। आपके जो है ना डिफरेंट रेडियो चैनल्स जो है ना, वो इंफॉर्मेशन जो है ना वो कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं। जो रेडियो चैनल्स होते हैं, रेडियो स्टेशन में रेडियो चैनल्स होते हैं। वो रेडियो चैनल जो है, जो भी आप सुन रहे होते हैं, वो दरअसल जो भी इंफॉर्मेशन है वो दरअसल रिलीज कर रहे होते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर एट सम फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। दे आर रिलीजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एट सम फ्रीक्वेंसी एंड ईच चैनल हैज अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। हर चैनल जो इंफॉर्मेशन रिलीज कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, हर चैनल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिलीज कर रहा होता है, दैट इज कैरिंग द इंफॉर्मेशन इनटू द एटमॉस्फेयर। तो वो जो सिग्नल्स हैं, दे आर रिलीज्ड एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड ईच चैनल हैज अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। तो जब आप अपना रेडियो जो है उस चैनल की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली ट्यून करते हैं, ठीक है ना, जस्ट द वे यू आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। वो जो एफएम है, बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, वो एफएम 101 जो होता है, बेसिकली क्या होता है, वो 101 मेगाहर्ट्ज है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ द चैनल्स that is carrying the information। जब आपका रेडियो जो है ना उस फ्रीक्वेंसी में 101 पे ट्यून हो जाता है ना, so what then you hear is the, फिर आपकी उस इंस्टेंट पे आपकी दरअसल रेजोनेंस होती है, and so then that's how you hear that what is being transferred through those electrical signals, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जब आपने एक उस चैनल की फ्रीक्वेंसी पे अपने रेडियो को ट्यून कर लिया, तो अब वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उन फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से वो रिलीज हुए थे, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे होते हैं, तो फिर आप वो इस तरीके से that's how you hear them, ठीक है ना। अदरवाइज आपके जो है ना सिग्नल्स जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हुए होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द रेडियो स्टेशन जो कि इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं। तो जब तक आपका रेडियो ट्यून नहीं होता ना उस फ्रीक्वेंसी पे, उस वक्त तक रेजोनेंस अकर नहीं होती और उस वक्त तक आप सुन नहीं पाते कि वो चैनल ने इंफॉर्मेशन क्या रिलीज की है, ठीक है ना। सो अगेन वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। इसके अलावा अगर आप रेजोनेंस अकर हो रहा है, जैसे इन केस ऑफ साउंड, सो दैट कैन डैमेज ह्यूमन इंटरनल ऑर्गन्स। रेजोनेंस ऑफ ब्रिजेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, और जैसे आपके सिविल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो भी ड्यू टू विंड्स जो है ना ऑसिलेट करते हैं, और अगर उनकी जो because they're going to oscillate they're going to oscillate due to winds, so that means that they are going to oscillate at some driving frequency। वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जब वो स्ट्रक्चर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाता है ना, तो बहुत लार्ज ऑसिलेशन उस स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से इट में कोलैप्स। दैट हैज हैपेंड अराउंड द वर्ल्ड this had happened several times with the structures around the globe। You may just search it over the web and you will find that the resonance ने जो है in different parts of the world it has brought damage to the civil structures, ठीक है ना। तो ये आपके pros and cons जो है वो resonance के मैंने जिक्र किए। That's how your topic has ended up, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं अब आ जाए Question 1, an aluminum sheet is suspended from an oscillator by means of a spring as illustrated in figure 3.1। Okay. An electromagnet is placed a short distance। Electromagnet को आपने place किया हुआ है from the center of the aluminum sheet, that's the center, and from here you have placed an electromagnet at some distance, again at distance x। This is a motor producing oscillations in the spring,
The oscillator is actually an electrical device that produces oscillations and to whatever it's connected to it. अभी ये spring आपके oscillator से connected है, so that's going to produce oscillations in the spring, जिसकी वजह से आपकी aluminum sheet that's going to oscillate up and down. The electromagnet is fixed at some distance from the center of the aluminum sheet. Okay, the electromagnet is switched off and the frequency f of the oscillation of the oscillator is gradually increased from a low value. अभी आपका electromagnet switched off है और आपकी ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने ग्रेजुअली इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि यू गोइंग टू ऑब्जर्व स्प्रिंग ऑसिलेटिंग एंड एज वेल एज द एल्यूमिनियम शीट ऑसिलेटिंग एट सम फ्रीक्वेंसी. ठीक है ना. द वेरिएशन विद फ्रीक्वेंसी f ऑफ द एम्पलीट्यूड a ऑफ एवरी वाइब्रेशन. अब आपकी जिस फ्रीक्वेंसी पे ये ऑसिलेटर स्प्रिंग और शीट को ऑसिलेट करा रहा है उसकी एम्पलीट्यूड a है, फ्रीक्वेंसी f है और उसकी वेरिएशन हमने शो की हुई है. अच्छा, ये आपकी एफ नॉट है. बेसिकली एफ नॉट जो है ना नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे ऑफ द स्प्रिंग एंड एल्यूमिनियम. या बेसिकली आप एल्यूमिनियम शीट ही ले लें इसको. ये यानी आपके जो स्प्रिंग सिस्टम है, स्प्रिंग एंड द एल्यूमिनियम शीट, स्प्रिंग प्लस एल्यूमिनियम शीट, ये आपका स्प्रिंग सिस्टम है. इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इज आल्सो वी कॉल इट एज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपकी इसी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस अकर्स होता है. स्प्रिंग सिस्टम. अच्छा, अब आपकी जो है ना, आपने जिस फ्रीक्वेंसी पे यू हैव स्टार्टेड टू मेक दैट स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट, वो है 0.9 टाइम्स ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, और आप इसको ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं. एंड सो when the frequency of the oscillator gets equal to the natural frequency of the spring system, तो वहाँ resonance होगी and you can see a large amplitude. ठीक है ना, large amplitude of the system. तो क्या कह रहा है, a peak on the graph appears at frequency f naught, explained by there is a frequency at f naught. So f naught is a natural frequency. When the driver frequency, which is the frequency of the oscillator, is increased until it is equal to the natural frequency, then the resonance occurs and sheet undergoes maximum displacement. All right. The electromagnet is now switched on and the frequency of the oscillator is again gradually increased from a low value. Draw a line to show the variation with frequency of the amplitude A of vibration. Now, as a result of this electromagnet being switched on, what is going to happen is this aluminum sheet is going to get attracted. The aluminum sheet is electromagnet se attract hogi, so it's not its motion is going to get opposed. अब ये electromagnet इसको attract कर रहा है, that is going to pull it towards itself. इसकी वजह से इस एल्यूमिनियम शीट का मोशन अपोज होगा, which means that as a result of electromagnet being switched on, damping is going to get introduced into the system. और जिसकी वजह से अब आपका क्या होगा, ये जो आपकी सिस्टम में जो आपकी एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आएगी with the frequency, so that will be less than what you had initially in the absence of damping or when the electromagnet was switched off. So ठीक है. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, drawn as a result of electromagnet being switched on, so there will be some damping will occur, and so the maximum amplitude at resonance जो है, at resonance जो maximum amplitude है वो अब और कम हो जाएगी. In fact जो और other frequencies पे भी जो amplitude है वो भी कम हो जाएगी. That's what you have to draw. अच्छा, question part C छोड़ दें, because that's based on electromagnetic induction. We'll come back to this once we have done with this concept of electromagnetic induction. ठीक है ना. अब आपका है the vertical spring supports a mass. Vertical spring supports a mass as shown figure 4.1. The mass is displaced vertically then released.
मास को हमने वर्टिकली डिस्प्लेस किया नीचे की तरफ, उसको फिर रिलीज कर दिया, आइदर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हमने वर्टिकली डिस्प्लेस किया और फिर रिलीज कर दिया. स्प्रिंग and the mass system is going to undergo simple harmonic motion, going to be oscillations. Variation with time t of the displacement from its mean position is shown like that. ठीक है. Student claims that the motion of the mass may be represented by the equation of this. पहली बात, वो कह रहा है कि आपकी जो वेरिएशन है in the displacement of the system that is given mathematically by this equation, that can be expressed mathematically by this equation. अब वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि ये इक्वेशन एप्रोप्रिएट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास y नॉट होती है एम्पलीट्यूड, and for all instants that for any value of t this amplitude must remain the same as what you can see by this equation. But you know कि आपके पास यहाँ amplitude constant ही नहीं है, that's your mean position. The amplitude is not constant, change होती है with the time. So this equation is again going to be inappropriate. और वो of course जो हमने पढ़ा था, the equations जो हमने पढ़ी थी used to represent the variation in the displacement, velocity, acceleration. That were when you don't have any damping in the system. यहाँ पे damping होगी. So amplitude is not constant. First of all, पहली बात तो ये. अच्छा, आप यहाँ पर you're not going to use the word damping. या आप use कर लें ऐसे due to damping. ठीक है ना? लेकिन आप ये नहीं लिखिएगा damping is occurring, that's why you can't use this equation now. क्योंकि आप यहाँ पर बेसिकली जो है ना, कहीं भी इक्वेशन में there is nothing as damping. ठीक है ना? There is no variable representing the damping. ठीक है ना? So why you cannot use this equation is that you need to refer to any variable that the value of that which cannot be applicable. ठीक है ना? तो आपने बेसिकली जैसे आपने देखा कि यहाँ पे y नॉट is something that is going to get affected by damping. तो आपने दरअसल ये y नॉट होती है एम्पलीट्यूड, so you have to write in terms of amplitude के amplitude constant नहीं है due to damping, that's why आप equation ये it's not valid. And secondly आपका जो अच्छा आप इसमें you can just break it down. उन्होंने जो है ना दो ड्यू टू डैम्पिंग नहीं, आपने फिर सेकंड उसके अंदर ना इसको एक्सप्लेन कर देना. बेसिकली आपका अगर मैं कहूँ टाइम पीरियड कितना है पहली ऑसिलेशन का, 0.62468.724.74. तो आपका टाइम पीरियड इज नॉट कांस्टेंट. ये आपकी जो टाइम पीरियड है पहली ऑसिलेशन का वो कितना है, तो ऑसिलेशन तो टाइम पीरियड है फर्स्ट ऑसिलेशन का दैट इज 0.74, 68 और 0.74 है. और ये जो दूसरी वाली ऑसिलेशन का जो टाइम है 0.74 to 1.2468 1.324 1.34 है. अगर टाइम पीरियड आपको कांस्टेंट नहीं है ना 0.74 इस वाली ऑसिलेशन का टाइम, और फिर ये टाइम कितना हो गया, इट्स गोइंग टू बी 0.6, तो 0.6 दूसरी ऑसिलेशन का टाइम, तो आपका टाइम पीरियड इज नॉट कांस्टेंट. तो आपने यहाँ पे लिखते हैं एम्पलीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट ड्यू टू डैम्पिंग, और या ये भी लिखने की जरूरत नहीं है वैसे. और द सेकंड थिंग इज ये टाइम पीरियड इज नॉट कांस्टेंट. और आपको पता है ये जो ओमेगा होती है, ओमेगा आई जस्ट रोट डाउन बिफोर एज बाय ओमेगा, इट्स द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट्स 2 पाई एफ और आइदर 2 पाई ओवर टी. अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं है तो ओमेगा की वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं है, मींस ओमेगा इज नॉट आल्सो कांस्टेंट, y नॉट इज आल्सो नॉट कांस्टेंट. तो ये इक्वेशन आप वैलिड नहीं है. डिटरमिन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस. तो अब
अब आप टाइम पीरियड निकाल लें 0.6 आ रहा है, दूसरे का क्या है? नहीं, टाइम पीरियड तो वैसे सेम ही है, टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड जो है ना वो सेम है, 0.6 पहली का, टाइम पीरियड इज ऑलमोस्ट द सेम, बहुत स्लाइटली अफेक्ट है मेरे ख्याल से, लाइक यू मे कंसीडर दिस एज वेरी लाइट डैम्पिंग, टाइम पीरियड इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अच्छा, तो 0.6 से आपका टाइम पीरियड, 0.6 इज योर टाइम पीरियड, दिस योर टाइम पीरियड, ये आपका टाइम पीरियड हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपकी पहली खत्म हुई। 0.6 is your time period, 2 pi over 0.6, 10.5 radians per second, that's your frequency. फिर क्या है, a mass is a lump of Palestine, mass है वो दरअसल एक lump of Palestine है, plasticine, sorry, mass is a lump of plasticine, the plasticine is now flattened so that its surface area increase, surface area increase हो गया, so it will be subjected to more air resistance, the mass of the lump, mass constant है लेकिन चूंकि surface area बढ़ने की वजह से it's subjected to more air resistance, ठीक है ना, और more air resistance means more damping, the plasticine is displaced downwards by 1.5 centimeters, again displace आपका 1.5 से ही हो रहा है डाउनवर्ड्स, पहले जब उसका सरफेस एरिया इतना वो नहीं था लार्ज, तब भी वो 1.5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड से रिलीज हुआ था, एज यू कैन सी फ्रॉम ग्राफ, और अभी भी जब उसको फ्लैटन कर दिया गया है तब भी 1.5 सेंटीमीटर से रिलीज हो रहा है, तो अब थोड़ी सी डैम्पिंग ज़्यादा होगी, तो यू कैन सी हाउ आई हैव ड्रॉन इट, -1.5 से शुरू हुआ, एट एवरी इंस्टेंट व्हाट यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी एम्पलीट्यूड जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम है, इनफैक्ट एम्पलीट्यूड भी अगर कम होगी, ठीक है ना, बट टाइम पीरियड आपका जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ठीक है ना, इट्स नॉट लाइक दैट व्हाटएवर द टाइप ऑफ डैम्पिंग, अगर आपने फ्लैटन करने के बाद बहुत हैवी डैम्पिंग होगी, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, इट विल अगेन बी लाइट डैम्पिंग, एंड सो आपकी ऑसिलेशंस डिक्रीज होंगी, बट आपका जो टाइम पीरियड है ना, तो जिस टाइम पे आपकी एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी that will just be remain the same almost, तो मैंने इसको 0.6 ही रखा, एंड देन अगेन यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम कर दी और दूसरी का भी 0.6 ही रखा, तो 1.2 में एंड, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास देखता हूँ कि बेसिकली जो है इन्होंने क्या किया है, downloads to physics, we see the oscillations, where are oscillations, ms, अच्छा अच्छा, एक तो ये कि एम्पलीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, और सेकेंडली है this the variation is as you can see कि आपका जो mass है that has been displaced from some point of maximum displacement, तो उसकी जो related mathematical equation है that would represent this variation in the displacement should not be in terms of sign, but it should be in terms of cos, because you can see कि आपकी जो variation है that takes the shape of the graph of cosine, ठीक है ना, so that should be in terms of cos and it should be minus cos, क्योंकि आपका जो शेप है ना, जो कि आपकी वेरिएशन डिस्प्लेसमेंट that your variation displacement is taking up, ये जो शेप है that is the shape of minus cosine, that's the shape of the graph of minus cosine, ठीक है ना, so it should be minus cos, equation should include minus cos instead of sine, that's how you're going to basically इसमें you are not assessed a lot related to this topic, and I've discussed two of the questions. I'm going to share the rest of the questions from rest of the practical questions with you, the file and this lecture as well recorded, you may go through
through it, go through the file, revise it, and then attempt a question, and then just let me know your queries. I'll just discuss them. ठीक है ना? टॉपिक आपको खत्म होगा इंशाल्लाह। कल वाली क्लास में हम लोग जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है।